Olá, tudo bem? Hoje neste vídeo eu vou mostrar de você comidas da Índia, também com nome. So guys, you can see I am inside of a sweet shop and this shop is located in our Sublaganj and this sweet shop name is Sri Syam Mistan Bhandar. Sri Syam Mistan Bhandar, and today in this video I will show you what is the Indian sweet names also, and also I will show you how much you need to pay money to purchase Indian sweets. Okay, आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये दुकान का नाम है श्री श्याम मिष्ठान भंडार और ये दुकान मैम की है और मैम का नाम है योगिता गुप्ता, राइट। एवजा जीसी की एससी लॉजा जी नॉमी है श्री श्याम मिष्ठान भंडार, तब मैम एला नॉमी है योगिता गुप्ता। मैम आप अपनी दुकान की कुछ स्पेशल चीज़ें कुछ बता दीजिए, मतलब आप क्या क्या मतलब स्पेशलिटी है आपकी दुकान की। हमारे यहाँ स्पेशल आप देख लीजिए, ये गाजर का हलवा है। ये हमारे यहाँ 80 साल पुराना गाजर का हलवा है, बहुत फेमस है, 80 सालों से रहा। ये टेस्ट हमारे यहाँ गाजर हलवा पूरे यूपी में नहीं मिलेगा, ना पूरे इंडिया में आपको मिलेगा। दाल का हलवा है, बाकी और भी मिठाइयाँ हैं, 6 तरह के लड्डू हैं, छेने की सारी मिठाइयाँ हैं। आप दिखा दो, आप वैसे दिखा दो। Já perguntei como ela que qual é especial em seus doces. Você está vendendo aqui. Ela me disse que este é gajar का हलवा, este é gajar का हलवा está muito especial em dentro de ela loja de comidas. Ela me disse que ninguém pode cozinhar igual que ela loja ने। ये गाजर का हलवा आपके कितने का होगा? ये 500 रुपये किलो है हमारे यहाँ पे। तो आपके यहाँ ये गाजर का हलवा 500 का है ना, तो आपने बोला कि ये पूरे यूपी में सबसे अच्छा है, मतलब पूरे यूपी के पूरे इंडिया में ऑल ओवर द गाजर के इंडिया। हलवे बहुत बनते हैं इंडिया में, बहुत जगह बनते हैं, बट ये टेस्ट आपको नहीं मिलेगा ओके इसके बराबर का। amigos, você pode ver que se você quiser comprar comida da Índia, gajar का हलवा, você precisa pagar dinheiro aqui 500 indianas rupias por kilograma. If you want to purchase this Indian dish, you have to pay 500 for 1 kilogram. तो आप लोग देख सकते हैं राजस्थानी बूंदी का लड्डू है और ये 200 रुपये किलो बिकता है। Amigos, você pode ver que este é outro estado comida da Índia, nome é Rajasthani बूंदी का लड्डू। Se você quiser comprar, você precisa 200 indianas rupias por comprar। और ये बूंदी का लड्डू जैसे खरीदने के लिए आपको 140 रुपये पे करने पड़ेंगे। Amigos, se você quiser comprar este बूंदी लड्डू, você precisa pagar dinheiro aqui 104 indianas rupias। आप लोग देख सकते हैं कि ये नारियल स्पेशल लड्डू है जिसका रेट मैम कितना है? 240। Se você quiser comprar esse coconut नारियल लड्डू em você precisa pagar dinheiro aqui 240 indianas rupias। यहाँ मैम की दुकान में एक हनी ड्यू पुडिंग है जिसको ख़रीदने के लिए आपको 30 रुपये पे करना पड़ेगा। Este é comida da Índia, nome é honeydew। Se você quiser, você precisa 30 indianas rupias por comprar तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मैम के पास छेने की 3 वैरायटीज़ हैं जो कि पूरे फेमस है अपने यूपी में। Amigos, você pode ver que esse é indiana comida nome é छेना comida nome है छेना। मैम कितने का होगा ये? हमारा 35 रुपीज़ पर पीस। ओके ये 30 रुपीज़ पर। ok Amigos, se você quiser comprar esta comida, você precisa pagar 25 indianas rupias. Também se você quiser outra, você precisa pagar aqui 30 indianas rupias. Nome é Chena, ok? Está bem? Amigos, você pode ver que esta é comida da Índia, nome é Malai Chap। Se você quiser comprar
ओम você preciso pagar 30 indianas rupias। तो आप सब लोग देख सकते हैं कि अगर आपको मलाई चाप खाना है इस दुकान का तो आपको 30 रुपये देना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे छेने की काफ़ी सारी वैरायटीज़ रखी हुई हैं। इसका नाम है डबल डेकर छेना। आपको 40 रुपये देना पड़ेगा एक पीस लेने के लिए। Si você quiser comprar essa comida nome é Double Decker Cena, se você quiser, você precisa pagar dinheiro por 40 indianas rupias। तो मैम क्या छेना अगर आपको खाना है तो आपको कम से कम 13 रुपये तो लेके आना ही पड़ेगा। Amigos, você pode ver que esta comida da Índia nome é Chena. Se você quiser comprar por comer, você precisa pagar dinheiro aqui. Dizer 3 indianas rupias। आप लोग इसका नाम तो जानते ही होंगे, इसका नाम है राजभोग और इसको खाने के लिए आपको 20 रुपये खर्चा करना पड़ेगा मैम की दुकान में। Amigos, você pode ver que esta comida nome é Rajbhog. Se você quiser comprar por comer, você precisa pagar dinheiro aqui 20 indianas rupias। Não é muito caro। आप लोग सब इसका नाम तो जानते ही होंगे। इस मिठाई का नाम है रसभरी और इसे खरीदने के लिए आपको 320 रुपये किलो देना पड़ेगा। Amigos, esta comida nome é रसभरी। Se você quiser comprar aqui na Índia, você precisa pagar 320 indianas rupias por 1 किलोग्राम। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये एक माइक्रो रसगुल्ला है जिसे ख़रीदने के लिए आपको 240 रुपये प्रति किलो के हिसाब से देना पड़ेगा। Esta é comida da Índia, nome é micro rasgulla। Se você quiser comprar, você precisa pagar aqui 240 indianas rupias por 1 किलोग्राम। तो ये रसगुल्ले हैं, आप लोग देख सकते हैं बड़े ही स्वादिष्ट हैं। अगर आपको इसे ख़रीदना है तो आपको 13 रुपये प्रति पीस के हिसाब से देना पड़ेगा। Se você quiser comprar रसगुल्ला esta indiana comida, você precisa pagar aqui 13 indianas rupias। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये काजू कतली है, इसका रेट है 800 प्रति किलो। Esta comida da Índia, काजू कतली। Se você comprar, você precisa pagar aqui 800 indianas rupias। तो ये मैम की स्पेशल मिठाई जिसका नाम है खीर कदम। अगर आपको ख़रीदना है तो आपको इसके लिए 400 प्रति किलो देना पड़ेगा। Amigos, você pode ver que esta comida nome é खीर कदम। Se você quiser comprar, você pode pagar dinheiro aqui 400 indianas rupias por 1 किलोग्राम। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस मिठाई का नाम है खोया रोल। अगर आपको इसे ख़रीदना है तो आपको इसके लिए भी 400 प्रति किलोग्राम देना पड़ेगा। Amigos, você pode ver que esse doce nome é खोया रोल। Se você quiser comprar, você precisa pagar dinheiro aqui 400 também por 1 किलोग्राम। तो मैम क्या चॉकलेट मिल्क एक मिठाई भी बिकती है जिसका रेट है 360 रुपीज़। Amigos, você pode ver que este é doce chocolate leite chocolate milk। Se você quiser comprar, você precisa pagar aqui 360 indianas rupias। तो आप लोग देख सकते हैं कि मिठाई एक शंख शेप में है। सिर्फ वो Amigos, você pode ver que este doce muito igual com uma fruta, mas este nome é शंख मिठाई। Se você quiser comprar, você precisa pagar 360 indianas rupias। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस मिठाई का शेप थोड़ा सा सेब की तरीके है
तो इस मिठाई का नाम भी सेब मिठाई है। सिर्फ अगर आपको इसे ख़रीदना है तो आपको इसके लिए 360 रुपये देना पड़ेगा प्रति किलो के हिसाब से। सिर्फ amigos, você pode ver que esse é parecido muito igual como uma massa, mas esse nome é sebo mitai. Se você quiser comprar, você precisa pagar dinheiro com 360 इंडियन रुपीस। आप लोग देख सकते हैं कि इस मिठाई का शेप थोड़ा सा खरबूजे के तरीके है, तो इस मिठाई का नाम भी खरबूजा मिठाई है। आई डोंट नो हाउ टू से, बट इसको भी खरीदने के लिए आपको 360 रुपये पे करना पड़ेगा प्रति किलोग्राम के हिसाब से। सी वो से quiser comprar essa comida, essa doce da Índia, doce nome é खरबूजा मिठाई। Se você quiser comprar, você precisa pagar dinheiro com 360 इंडियन रुपये। अगर आपको सोन पापड़ी खरीदना है तो आपको 400 प्रति किलोग्राम के हिसाब से पे करना पड़ेगा। Se você quiser comprar essa comida, esse doce, nome é sohan papri. Se você quiser comprar esse doce, você precisa pagar dinheiro aqui 400 इंडियन रुपीस किलोग्राम। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस मिठाई का नाम है बत्तीसा मेवा लड्डू। मैम कितने का है? 300 आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। Amigos, você pode ver que essa comida nome é Batista Meva Laddu. Se você quiser comprar, você precisa pagar dinheiro aqui 300 इंडियन रुपीस। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस मिठाई का नाम है सोठ लड्डू। इसको आपको ख़रीदने के लिए 400 प्रति किलो के हिसाब से लेना पड़ेगा। Se você quiser comprar este doce da Índia, nome é soठ लड्डू। Se você quiser comprar, você precisa pagar dinheiro aqui 400 इंडियन रुपीस।